दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों से लगातार हवा जहरीली बनी हुई है। लोग जहर लेने को मजबूर हैं। AQI लेवल खराब श्रेणी में है। आज भी AQI लेवल 400 से ऊपर है कई इलाकों में। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये काफी प्रभाव डाल रहा है। तो आज सवाल है, क्या वजह हर साल दोहराई जा रही है जिससे पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है? क्या हम आने वाले वर्षों में इस पॉल्यूशन से बाहर आ सकते हैं? ये पॉल्यूशन कम हो सकता है दिल्ली में? ये कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने आए हैं JNU में एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर सुदेश यादव सर से। इनसे जानेंगे इस बारे में कि क्या रीज़न है AQI लेवल के खराब रहने का, दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ने का, और ये इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, दिल्ली NCR में पिछले कुछ समय से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मेन रीज़न, रियल रीज़न क्या लगता है आपको? देखिए, एयर पोल्यूशन के 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हमारे पास, उनको मेज़र करते हुए हम एयर क्वालिटी बताते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज एन एम्पिरिकल मेथड यूजिंग दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स इन विच 3 मस्ट बी देयर, 1 मस्ट बी PM 2.5। सो अभी जो प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का, वो PM 2.5 से लिंक्ड ज़्यादा है। We have a good control on CO and then NOx में NO, lead we have phased out. So currently the issue stays with PM 2.5, which is a particle, and the ozone formation, which is not released but formed in the atmosphere, and the NO2. So NO2 is a precursor for formation of ozone. So these 3 pollutants are responsible now, as on date, about the bad air quality dominantly. AQI लेवल सर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कई जगहों पर डेटा में सही भी आ रहा है कि कम है। उसके रीजंस क्या है? See, air quality is an index which basically is required and used to inform the public, particularly the old age people, children who have high metabolism, and those who are suffering from any disease, particularly asthma, that they should not come out, reduce their exposure, stay inside, or they use the mask. That is the purpose of AQI. But it not necessarily, affecting all equally. It affects more to the old age person, to children, and those who are suffering already from the disease. अभी आपने PM 2.5 का जिक्र किया और आपने बताया कि 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रखा है। उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। See, PM 2.5 is the particles and 2.5 is the aerodynamic diameter of the particle. These particles are emitted, plus they are formed in the atmosphere. When we say 2.5, that means जितना भी पार्टिकल है वो 2.5 माइक्रोन मीटर डायमीटर से नीचे का है। लेकिन अगर उसको फर्दर ब्रेकअप करेंगे आप, तो पता लगेगा कि 1 माइक्रोन या उससे नीचे का पार्टिकल उसमें ज़्यादा है। अगर आप PM 2.59 को माने कि 100 पार्टिकल हैं आपके पास, और फिर उसमें से आप 1 निकालें, 1 से नीचे कितना है, तो पता लगा 70 से 80 पार्टिकल। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो PM 2.5 एक लार्जर कंपोजिशन है और इम्पैक्ट जो है फाइनर की वजह से। सो दिस पार्टिकल्स आर एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर बाय द सोर्स, प्लस दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट वेपर टू कंडेंसेशन टू न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म्स। जब गर्म हवा निकलती है वो बाहर एक्सपोज होगी तो ठंडा होगी, तो वो जो गैसियस पोल्यूटेंट है, वार्म हॉट वेपर है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका पार्टिकल फेज में। और जो शरीर हमारा है, इसमें जब भी पार्टिकल अंदर जाएगा तो बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, तो वो उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करेगी थ्रू सीलिया एस्केलेटरी मैकेनिज्म। लेकिन जो फाइबर्स हैं उनके बीच से पार्टिकल्स लेस देन 1 अंदर चला जाएगा बॉडी में। अंदर जाने के बाद वो ब्लड सेल्स के थ्रू, एपिथेलियल सेल्स थ्रू बिकम्स द पार्ट ऑफ द ब्लड सेल, and some of the particles are get excreted from the body, but they stay inside the body. When they stay inside the body, that is a foreign material. Now, depending upon the chemistry of the particle, it can impact your breathing rate, it can impact you neurologically, it can impact blood pressure, cardiology. And a recent study, State of Global Air report comes every year, which have the data. Recently, we are encountering that this particle particularly is responsible for dementia also and impacting mental health.
So a good amount of research is being carried out because signs are coming, the data is coming, that this also is impacting not only the physiological changes but on the mental health. And the second part, if you say the pollutant ozone, that is not emitted, that is formed. And NO2 is released in the atmosphere directly. So NO2 gives the oxygen atom and combines and forms ozone, secondary pollutant. Now, when we say that it is formed in the atmosphere through photochemical reaction, it is expected that during the summer time it will high. And if you follow the daily newspapers, national dailies, you will see that there are good number of hotspots have been identified by CPCB and researchers about ozone also. Winter time it is limited, but knowing that this pollution is not only, we are looking at the concentration which we compare with the standards given by the Pollution Control Agency for industrial area, residential area, sensitive area. So that concentration actually, if you see the AQI is a numerical number which is a dimensions number, but that number is driven by or based upon these concentrations which have a denominator of microgram per meter cube. So how much the pollutant is present in 1 meter cube of the air, right? Now 1 meter cube of air, like if the ventilation is high, then the pollutant will disperse. If ventilation is low, then pollutant will stay or concentrate there. So in winter time, the concentrations are lower than that summer time. But if you look at the meter cube concentration, that is more because the atmosphere is stable. Wind flow is not there, which is a driving force, dispersion force. And there is a component we call as a mixing height, which apparently transforms to ventilation coefficient. Ventilation coefficient has a literal meaning. Your room is ventilated. So you will have a less pollution, less problem inside, good air breathing if you have ventilation. Your kitchen has a good ventilation. So similarly, the ambient atmosphere also have a ventilation. Now that ventilation coefficient, when it goes down to 6,000 meters square per second, it is a simple calculation method, easy to understand for the audience, that mixing height up to which they can be mixed, and the wind speed. So wind speed is low, so the end result will be low. So the atmospheric ventilation coefficient significantly reduces in winter time because mixing height comes down. Why mixing height comes down? That there is a phenomenon called as temperature inversion. So the two multipliers, which is wind speed and the mixing height, both are going down. So net result is ventilation इन्वर्जन ले रहे हैं, बायोमास मिलके यहाँ पे ट्रैप्ड स्मोक बना रहे हैं. Yes, see, this is a natural phenomenon. It is neither in my control or your control. The radiative cooling process, the subsidence process of colder air mass, they are common, frequent, and the northern India, it's well reported that we have inversion. Inversion, as the name indicates, when we move up from the surface to go up, the temperature goes down, घटता है. लेकिन कुछ एक abnormal स्थिति बन जाती है जब नीचे ठंडा एयर है और ऊपर गर्म है. दैट्स इन्वर्जन. इन नॉर्मल प्रोसेस गर्म हवा नीचे और ठंडी हवा ऊपर. जब ये उल्टा हो जाएगा तो वो एक एक्चुअली 2 डायमेंशन में देखेंगे आप तो ट्रैप बन जाएगा. जब वो ट्रैप बन गया रिवर्स होने से, तो पोल्यूटेंट डिस्पर्सल वर्टिकली अप नहीं होगा, और जब वर्टिकली अप नहीं होगा तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सल में जाएगा. हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सल की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है विंड है नहीं. सो फिर वो वहीं स्टेगनेट करता है तो वो कंसंट्रेट करने लगा इररेस्पेक्टिव the source are same. If you change these parameters, keep the source same, the end result in the concentration will increase and subsequently AQI will increase. So this is one, which is not variable. It is a natural process linked to the geographical setting of the region that we encounter temperature inversion conditions. तो ये रीजन है कि मानसून के बाद ही पॉल्यूशन AQI लेवल जो है वो बढ़ता है, यही रीजन है इसका. This is one of the reasons. Okay. Now you say vehicular pollution is there, so we have a good control that we are moving towards CNG and electric vehicle, right? And we also had odd and even formula in previously. So if you look, ठीक था odd and even formula. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन I leave it to the audience and to you to report that there are documents available what it has impacted. To me, honestly, I can conclude to say on that account that it did not yield the desired result what was expected. Why? Because the vehicular emissions are not only tail end emissions. आप धुआं देखते हैं कि धुआं निकला या नहीं निकला.
वो एक कंपोनेंट है। लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गया है एक्सपोनेंशियली। ना व्हीकल जब चलता है तो टायर अब्रेज होता है, बॉडी अब्रेज होती है, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो एक पार्टिकल है ना। जी। और आप देखोगे रोड के ऊपर डस्ट है। जब व्हीकल जाता है या रुकता है किसी बस स्टॉप पे, आपने अनुभव किया होगा, सडनली एक डस्ट का प्लूम ऊपर जाता है क्योंकि एक टर्बुलेंस, लोकल टर्बुलेंस हो जाती है। तो उसकी वजह से एक एडिशनल जो पता लग रहा है कि टेल एंड एमिशन हमने कम किया। जो धुआं निकल रहा था उसका पार्टिकल, उसका एमिशन एनओएक्स कम हुआ, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने से नाउ वियर एंड टियर ऑफ व्हीकल पार्ट्स हैज बिकम ए सब्सटेंशियल सोर्स। मतलब सीएनजी जो बसें आ गई हैं, ऑटो आ गए हैं, गाड़ियां भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं, इसके बाद भी जो पर्टिकुलेट मैटर है सेकेंडरी वो बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है। इसका मैं आपको श्रोताओं को एक इम्पोर्टेंट बात है कि कहीं भी झाड़ू लग रहा हो, जो हमारा क्लीनिंग क्रू काम करता है, दिल्ली की बात करें तो एमसीडी का, आप उसको थोड़ी देर खड़ा होकर के देखिए। आपने महसूस किया होगा, बट मेरे कहने के बाद आप देखिए उसको ध्यान से। वो जो लोकल ब्रूमिंग हो रहा होता है, अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो वो प्लूम एक पार्टिकल का ऊपर चला जाता है। जितना फाइनर पार्टिकल होगा, मैंने कहा 2.5 तो एक रेंज है, दैट फ्रॉम 0.001 टू 2.5। अभी 2.5 से नीचे जाओगे तो पार्टिकल जितना छोटा होता जाएगा उतना उसका सस्पेंशन टाइम, हैंगिंग टाइम, रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर मोर है। तो वो आपको देख के दिखेगा साफ साफ कि प्लूम ऊपर चला गया, और इट टेक्स काफ़ी टाइम टू सेटल इट डाउन। नाउ इट टेक्स टाइम, एंड देन considering that, let us take one example of brooming activity. Delhi has nearly 50 to 60,000 cleaning crew if you look at the whole capital region. So सब अगर ऐसा करेगा तो वो पूरा पूरा अकोमोडेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में हैंग करने लगेगा। और मैंने आपको बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर डिस्पर्सल फोर्स है नहीं, मीडियम मिला हुआ है, एटमॉस्फेयर है, उसमें चला गया, लेकिन उसको जो डिस्पर्सल ड्राइवर था उसका वो है नहीं, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस था वो भी नहीं है। क्यों? कि पार्टिकल लाइटर बहुत है नेचर में, फाइनर बहुत है नेचर में। तो टेल एंड एमिशंस पे सब्सिक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we have paid attention, we have drastically reduced the pollutants, but related to wear and tear that is coming, and the loose material which is already lying on the surface, that is another problem which is emitting these particles. So if you look at the overall air quality pollutant or air quality index, this particle is coming out significantly singled out, that it is main culprit, one among the main culprits. तो ये तो होगी प्रॉब्लम सर, और भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें, मतलब योगदान हो किसी जिसका, तो उसके बारे में बताइए। इसमें प्रॉब्लम PM 2.5 की हेल्थ से ही नहीं है, बिकॉज हेल्थ इमीडिएटली वी आर ट्रबलिंग, इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज मॉनिटरिंग, वी हैव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस. It also has a climate dynamics to it, that particle size and chemistry, how much it will reflect, how much it will absorb. So the climate is also getting impacted with these particles. It has a two-end member. Also the particle in a larger perspective, they play a wider role in nutrient dynamics. What is the particle? What is its chemical composition and where it is? Like I give you one example. Particle transport from the continental terrestrial ecosystem to the ocean ecosystem is very, very essentially required, because it supplies iron there, nitrogen there, phosphorus there, which acts as a limiting nutrient, and that nutrient is provided and carbon sequestration. So it is not that we can say that particle should be completely away from the atmosphere. It is essential component, but where it is, how much it is, and what is its chemistry, what is its source essentially, that must be looked into it. Problem is there, yes, very true. And people say that it is in Delhi, that I slightly disagree. If you go 100 kilometers to Haryana, South Haryana, North Haryana, or towards Ghaziabad, Dadri, it's all around like that. Even you go to Amritsar. So the sources are increasing, plus the climate which is changing. Like it's a time when the wind speed should be there, western disturbances should arrive, but that is not happening. So in natural settings, natural forces, they are also changing the pattern. That's the climate change. So 1 plus 1 is becoming 11 rather than 2. They are helping each other to increase this net concentration, which apparently reflected in the air quality index. Please
subscribe to the channel and download the Politikos app from the links in the description.